Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is force and pressure. You will learn about effects of force. Forces are due to an interaction, types of forces, resultant force, spring balance, pressure, atmosphere pressure. We do many jobs in our daily life like lifting things, moving things from one place to another, cutting objects, etc. To do these jobs, we have to put some effort. During the festival of Holi, you throw small balloons filled with water at your friends. You will notice that if you just touch the balloon to your friend's body, the balloon does not burst. However, when you throw the balloon with some effort, it hits your friend, bursts and splashes the water contained in it. तो आप डेली बेसिस पे आप इतने सारे टाइप के जॉब्स करते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें लिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उन सभी में आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है. While swimming, you push the water behind with some effort. While opening a door, we have to push the door handle, and at the same time of closing the door, we pull the door handle with our hand. While playing football, you hit the ball with some effort. So in our everyday life, we observe that some effort is required to make a stationary object into motion or to stop a moving object. This effort can be push or a pull. Pushes and pulls are forces. Forces are the important parts of our world. We use forces while we work and play. Forces are all around us. So, in a simple way, a push or a pull on a body is called force. The direction in which a body is pushed or pulled is called the direction of force. Objects cannot move by themselves. A force is needed to push or pull them before they can start or stop moving. तो in short, to summarize everything that has been said right now, कोई भी चीज़ पे आपको अगर मूव करना है, किसी चीज़ को मोशन में लाना है, मोशन वाली चीज़ को रोकना है, डायरेक्शन चेंज करना है, उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है. दो टाइप की फोर्स होती है, पुश एंड पुल. Effects of force. A force cannot be seen, it can be judged only by the effects which it can produce in various bodies or objects around us. तो आप force देख नहीं सकते हो, but आप उसको feel कर सकते हो अलग अलग objects पे. A force can produce the following effects. Making a moving object stop. While catching a ball thrown by your friend, you can apply push and the moving ball comes to a stop. Changes the direction of a still or a moving object. You can apply push to an almirah to make it face a different direction. A football player pushes the football to make it move in a different direction over to another player of this team. कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप अपना पुश या पुल कोई भी फोर्स लगाकर उसे रोक सकते हैं. अलमीरा का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स. Change the speed of a moving object. You must have made someone push your swing to increase the speed while you sat on it. An adult child may stand opposite and apply a push to a tricycle being run by a younger child and slow it down. तो swing झूला झुलाना है, speed तेज करनी है, कम करना है, bicycle चलानी है, सभी चीज़ों में force की ज़रूरत होती है. Change the shape of an object. Every day our mother rolls down a ball of kneaded flour into a chapati, different shape, by applying a push. You might have played with molding clay of different colors, making it into so many different shapes of fruits, animals, etc. Here also a push is applied by you. You might have seen laborers breaking down bricks or stones into smaller pieces by hitting them with a hammer. Again, the shape of the bricks or stones is getting changed due to a push or hitting. अब hit करने से, किसी चीज़ पे force apply करने से आप उसकी shape को भी change कर सकते हैं. As described by the above examples, a force applied on an object can accomplish at least one of the following results. Move an object lying at rest, stop a moving object, change the speed of an object, change the direction of an object, change the shape of an object. तो force apply करने से ये 5 चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही. मोशन वाली चीज़ रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट वाली चीज़ मोशन पे चली जाएगी, शेप चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है और स्पीड को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो. Fact box. A force does not necessarily cause motion. There are times when we push or pull an object with all our might, but it does not move. This does not mean that we are not applying a force, but the force we are applying is not sufficient to move the object. अब हर लोकेशंस पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सफिशेंट हो. अगर सफिशेंट नहीं होगी तो वो चीज़ या तो मूव नहीं करेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, या इन पांचों में से कोई भी एक चीज़ नहीं हो पाएगी.
Forces are due to an interaction. We have seen that when force is applied, either push or pull, there is some kind of change in the state of motion of the object. Let us see when does force come into play. Suppose there is a car which is not starting. Now if you stand behind the stationary car, it will certainly not move. Now if you push the car, that is the force is applied, car will begin to move in the direction of applied force. When we kick a fall or pull a cart, interaction of two objects is required. Thus, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Therefore, we can say that forces are due to interaction of one object with another. तो ये जो आपका force apply होता है या कोई changes अगर आते हैं तो वो interaction की वजह से होते हैं. For instance, अगर आप एक गाड़ी के पीछे खड़े हैं तो सिर्फ आपके खड़े रहने से गाड़ी मूव नहीं करेगी, इतने ताकतवर आप नहीं हैं. आपको अपना हाथ लगाना पड़ेगा, force apply करना पड़ेगा, applied force के direction में आपकी गाड़ी move होना शुरू हो जाएगी. In most cases like kicking a ball, pushing a cart, pulling a drawer, the force and the object come in direct contact with each other. Such forces are called contact forces. However, interaction may not always involve a direct physical contact. Such forces are called non-contact forces. For example, magnet attracts iron objects without coming in direct contact. Thus, forces are of two kinds. दो kind की forces होती हैं. एक contact जिसमें दोनों objects के बीच में interaction होता है. दूसरी होती है non-contact forces. जैसे magnets के पास अगर आप iron nails लेकर आएंगे तो वो अपने आप बिना direct contact के attract होने लग जाती हैं. Types of forces. There are two kinds of forces, contact force and non-contact force. Contact force. Forces that action objects by direct or indirect physical contact are called contact forces. The following are some kinds of contact forces. Number one is muscular force. The force exerted by the action of muscles in our body is called muscular force. For example, when we lift a bucket of water or push a cart, kick a ball, walk or run, we use muscular force. Digestion of food, blending of our body, breathing are all carried out due to the force exerted by the muscles. पहली कौन सी contact force है? Muscular. कोई चीज़ lift करनी है, खाना नीचे तक डालना है, digestion हो रहा है, bend आप हो रहे हो, ये सारी आपकी muscular forces की वजह से है. Fact box. Bodybuilding is an art of making your muscles stronger and well shaped. Bodybuilding से क्या होता है? आपकी जो muscles होती हैं और भी ज़्यादा strong और shape में आ जाती हैं. Similarly, animals like bullocks, horses, donkeys and camels also use muscular force to do heavy work such as pulling a cart or a tonga, plowing, carrying heavy load, etc. इसी तरीके से बहुत सारे animals का use करा जाता है जो push और pull दोनों type के forces लगाते हैं चीज़ों को move करने के लिए. Second is friction. Friction is also a type of contact force. The force acting between two surfaces in contact with each other which opposes the motion of one body over the other is called friction or force of friction. The force of friction always acts on all moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. Example, a rolling ball comes to an rest after some time due to the friction between the ground and the surface of the ball. A cycle stops after some time if you stop pedaling because of the friction between the road and the cycle. तो friction में क्या होता है? इसमें जो force होती है oppositely act करती है. बॉल को आप एक rough surface पे फेंकते हैं, थोड़ी देर के बाद अपने आप ही halt पे आ जाती है. क्यों? क्योंकि road surface और जो बॉल होती है वो दोनों friction create करती है जिसकी वजह से एक point पे आके वो रुक जाती है. Non-contact force or action at a distance force. There are some kind of forces which can exert from a distance without touching the object. For example, a magnet can exert a pull, attraction or a push, repulsion on another magnet even when the two magnets are at distance from each other. The force which can act even without any actual contact between the two objects is called a non-contact force or action at a distance force. Example, gravitational force, electrostatic force and magnetic force are non-contact forces or action at a distance forces. अब non-contact forces कौन सी होती है? जैसे gravitational force है. बॉल को जब आप ऊपर से फेंकते हैं वो अर्थ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बिना कॉन्टैक्ट के भी वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं. Some typical non-contact forces are described below. Number one is magnetic force. A magnet attracts nails and pins made from iron even from some distance. A magnet attracts another magnet when the unlike poles are brought nearer. A magnet repels another magnet when the like poles are brought
nearer. तो मैग्नेटिक फोर्स भी इसी तरीके से काम करती है. दो मैग्नेट को आप पास में लेकर आइए, ऑपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, लाइक पोल्स होंगे तो रिपेल कर जाएंगे. आयन नील्स लेकर आएंगे वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगी. These examples show that a magnet exerts some force on the objects made of iron as well as other magnets when brought nearer to them. The force exerted by a magnet is called magnetic force. The magnetic force acts from a distance. अब magnets के जो force exert होती है certain distance पे होती है, इसको magnetic force कहा जाता है और ये आपकी एक distance से भी attract कर सकती हैं चीज़ों को. Second is electrostatic force. The force exerted by an electrified body is called electrostatic force. Electricity जहाँ पर आपकी produce होती है उसकी वजह से जो आपकी forces exert होती हैं, that is known as electrostatic force. Activity 1. Rub a plastic pen or comb into your dry hair and then hold it near some tiny pieces of paper. What happens? The tiny pieces of paper get attracted towards the plastic pen or comb. The tiny pieces of paper get attracted due to the force exerted by the electrostatic charge on the pen or comb. प्लास्टिक का कोम्ब लीजिए, अपने ड्राई हेयर पे उसको रब करिए, पीसेज ऑफ पेपर के पास लेकर आएंगे तो वो डायरेक्टली आपके अट्रैक्ट होने लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपके ड्राई हेयर ने प्लास्टिक के कोम्ब पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से वो पीसेज अट्रैक्ट होने लग गए. Third is the gravitational force. The force of attraction between any two objects possessing mass is called the force of gravitation or gravitational force. For example, the force acting between any two books, between a book and a table, between you and your friend, between the earth and the moon, etc. is gravitational force. Gravitational force exists everywhere in the universe. Earth has a huge mass, so it attracts every object towards it. That is why a ball thrown upwards ultimately comes down. A ripened fruit falling from a tree falls down to the earth. तो gravitational force क्या होता है? दो heavy masses के बीच का attraction होता है. बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी. आपका कोई फ्रूट है वो राइप हो चुका है, वो पेड़ से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ गिरता है. This is the gravitational force. Fact box. The weight of quantities lying in the two pans of a weighing balance are said to be equal when the gravitational forces acting on both pans become equal. तो आपकी जो quantities होती है, कोई भी आपने अगर चीज़ रखी हुई है, अगर वो parallel होती है, equal उनका balance होता है, इसका मतलब है ये gravitational force दोनों पे बराबर तरीके से काम कर रहा है. Resultant force. At times, more than one force acts on a body at the same time. In such a case, the effect on the object is due to the net force acting on it. Resultant force क्या होती है? एक पर्टिकुलर चीज़ पे जब आप कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, वो कितना मूव कर रही है, कितना फोर्स आपका उस पर अप्लाई होकर रिजल्टेंट फोर्स आपको दे रहा है, दैट इज नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स. Activity 2. Take a heavy object like a table. First, try to push it alone. Then, ask one of your friends to help you push it. Is it easier to do so? Now, if your friend pushes the table from the opposite end, does it move? And if so, in which direction? अब आप अगर एक सिंगल बॉक्स को खुद अकेले पुश करेंगे और फिर दूसरे को बुलाएंगे तो आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बट पर लेवल पे कम हो जाएगा. दो लोग एक ही बॉक्स को अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फोर्स कम लगता है. अब ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर दोनों करेंगे तो अगर दोनों की फोर्स जो अप्लाइड है वो इक्वल है तो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा. When both you and your friend move the table in the same direction, it can easily be done and much faster than when you alone had to do it. In the second case, a table will move in the direction in which more force is applied. Thus, we can conclude that when two forces act in the same direction along the same line, the resultant force is equal to the sum of the two forces. When two forces act on an object in opposite directions, the net force acting on it is the difference between the two forces. तो एक ही direction में अगर force apply हो रही है तो दोनों का जो सम होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा. ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है तो जो नेट फोर्स होगी वो दोनों फोर्स का डिफरेंस होगा. You must have seen a game of tug of war. When the two sides pull the rope hard, it does not at times move in any direction. This is because the resultant force, net force acting on it is zero. If the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. तो tug of war होती है, उसमें भी अगर दोनों साइड का जो opposite direction में force apply हो रहा है equal होगा तो net force आपकी zero होगी, कोई भी change उसमें नहीं होगा. Testing time. Fill in the blanks. A dash or dash on a body is called force. Force can change the direction of a dash or a dash object.
Dash forces act on objects of direct as indirect physical contact. Direction of friction is always dash to the direction of motion. The dash force acts from a distance. So, जो भी appropriate answer आपको लगता है वो आपको यहाँ पे fill कर देना है. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. State of motion means the speed and direction of motion. These two states of motion are rest and in motion. At times, you may apply force, but it does not result in a change in the state of motion. You will not be able to move a wall irrespective of the amount of force you apply. अब आपका अगर आप एक दीवार को धक्का मारने की कोशिश करेंगे तो doesn't matter आप कितना force apply कर रहे हैं, आप उस दीवार को नहीं हिला पाएंगे. Third, a force can change the size and shape of an object. Activity 3. Take a plasticine or a dough, press it down with your hand. Take a rubber band and stretch it. Squeeze a toothpaste out of a tube. Press an inflated air pillow and pull a spring. ये पांचों जो एक्टिविटीज़ है इसमें जैसे ही आप प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही आपका जो भी आइटम है उसका शेप चेंज हो जाएगा. Spring balance. Spring balance is a device which is used to measure the weight of a body. The object to be weighed is attached to the hook of the spring balance, which is held vertically either from a book or with a hand. The spring gets stretched due to the gravitational pull and hence the pointer slides downward on the engraved scale. The weight of the object is read from the position of the pointer on the स्केल. तो यहाँ पर एक हुक होता है, स्केल होता है, स्प्रिंग का पॉइंटर होता है, इसके लास्ट में एक हुक होता है. उसमें जो भी चीज़ आप डालते हैं उसका पर्टिकुलर फोर्स कितना वेट है वो आपको पता चल जाएगा. Activity 4. Aim to make a spring balance and measuring the different ways. Material required: rubber band, paper clip, pin, some identical coins, matchbox tray, paper scale, a wooden panel. Procedure: take a wooden panel, cut a rubber band, tie it on a nail and fix the nail on the upper corner of wood panel. Tie a paper clip to the other end of the rubber band and to this clip tie a matchbox tray as shown in the figure. Use a pin or matchstick as a pointer to move along the paper scale. Use 50 paise coins as a weigh. Use a small stone to stretch the rubber band first and mark 0 on scale. Each number is the weight of the coin. Using identical coins, mark divisions on your scale. Use your balance to weigh light objects. अब आपको क्या करना है, मैच बॉक्स लेना है, हुक लेना है और इसी तरीके का एक आपको स्प्रिंग हुक बना देना है. लास्ट में जो हुक होगा उसमें आपकी अलग अलग मार्किंग्स आप कॉइन्स के थ्रू कर देंगे और आप किसी भी आइटम का जो वेट है वो आप मेजर कर सकते हैं. Fact box. There are many natural forces whose effects you can see. Strong winds, storms and hurricanes can exert much force and cause damage to houses, people and other living things. Running water can exert a force. In villages, this force is used to turn a wheel which grinds grains. In powerhouses, falling water is used to turn the blades of a giant wheel in a machine called turbine. This machine is used to make electricity. Electricity obtained from water power is called hydroelectric power. टर्बाइंस मूव करे जाते हैं हाई प्रेशर वाले पानी से. टर्बाइंस में ये टलते हैं, ब्लेड्स आपकी मूव होती हैं, इसी से आपके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जाती है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. Pressure. You would have noticed that it is easy to pierce a bunch of papers with a sharp pin, but try doing the same with a blunt pin. Did you succeed? Try pushing a nail into a wooden plank by its head and the pointed end, which is easier. You have to exert more force to pierce the paper with a blunt pin. It is easier to push the nail into the wooden plank with the pointed end. आप अगर एक sharp edged pin से किसी पेपर को pierce करने की कोशिश करेंगे होगा, बट वहीं पर अगर आप एक blunt pin लेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा difficulty होगी. You would have also noticed that the tip of the sharp pin is smaller than that of the blunt pin. Similarly, the tip of the pointed end of the nail is smaller than its head. From this, we deduce that the area over which the force is applied plays a role in making these tasks easier. The force acting on a unit area of a surface is known as pressure. तो एक particular surface पे एक unit area पे कितना pressure या force exert हो रहा है, that is known as pressure. The lesser the area on which a given force acts, the more the pressure will be and vice versa. जितना छोटा area होगा उतना ही ज़्यादा आपका pressure exert होगा. Pressure is equals to force divided by area on which it acts.
The SI unit of pressure is Newton meter per square meter. It is called a Pascal. 1 Pascal is the pressure exerted on a surface of 1 meter squared by a force of 1 Newton. तो SI unit क्या है? N divided by meter per square meter. When you stand on the floor, you exert a force against the floor. This pressure you exert in your body weight in pounds divided by the surface area under your feet or shoes. In countries where there is a snowfall, you can see people wearing snowshoes. They do this to avoid sinking in the snow. अब जहाँ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर आप देखेंगे स्नो शूज़ लोग पहनते हैं ताकि उनका पैर धंस ना जाए. अब ये क्यों होता है? प्रेशर जो आपका एक पर यूनिट एरिया पे एक्सर्ट होता है उस पर डिपेंड करता है. Fact box. High heels concentrate a large amount of face into a small area. The great pressure transmitted through such a heel can make you uncomfortable while walking on a soft ground. तो आपकी जो पेंसिल हील्स होती हैं या बहुत ज़्यादा शार्प हील्स होती हैं, अब क्योंकि बहुत पॉइंटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर वो एक्सर्ट करती हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, इसकी वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है जब आप ऐसी हील्स बहुत लंबे टाइम के लिए पहनते हैं. This trick spreads a person's body weight over a larger area. The constant body weight in larger area produces a low pressure on the snow surface. This is another reason why large vehicles have big tires. The heavy mass must be distributed over larger area or else the high pressure on the road surface would practically break down the road. अब बड़े बड़े व्हीकल्स में भी इसीलिए बड़े बड़े टायर्स होते हैं ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. अगर इतने बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स में पतले या छोटे टायर्स होंगे तो वो रोड को तोड़ देंगे. Activity 5. Aim to demonstrate the effect of pressure exerted by solids on surfaces in contact. Materials required: heavy house brick and mud. Procedure: put a heavy house brick on mud standing on biggest area. Now stand it on the long area and the second biggest area. Now stand it on the short side, the smallest area. Record your observations. Observation: the brick sinks deepest when the area of the brick touching the mud is least. Inference: the weight of the brick remains the same but the pressure the brick exerts on the mud changes in the area of contact changes. मड लीजिए, एक ब्रिक लीजिए, पहले जब आप उसको हॉरिजॉन्टली डालेंगे तो वो ज़्यादा गहराई पे नहीं जाएगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम हो जाएगा. वहीं पर जब आप उसको वर्टिकली लिफ्ट कर देंगे उसके बाद आप मड में डालेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा डेप्थ पे जाएगा. Unit of pressure. The unit of pressure is Pascal, PA. It is named after the French scientist Blaise Pascal. 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square. तो unit of pressure जो है Pascal है, ये एक French scientist है Blaise Pascal, उनके नाम पे रखी गई है. Pressure exerted by liquids and gases. Both liquids and gases exert pressure. Liquid और gas दोनों ही pressure exert करते हैं. Activity 6. Take a tin can or a plastic bottle. Drill a few holes all around it near the bottom. The holes must be at the same height from the bottom. Now fill the bottle with water. What do you observe? Water rushes out from all the holes and falls at the same distance from the can. एक कैन लीजिए, उसके बॉटम पे इक्वल डिस्टेंसेस पे होल्स करिए, पानी डालिए. थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पानी सारे होल्स से इक्वल डिस्टेंसेस पे जा रहा है, इक्वल प्रेशर से जा रहा है. इसका मतलब क्या है? लिक्विड हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता है. This shows that liquids exert equal pressure in all the directions at same depth. Activity 7. Take a tall can, empty talcum powder can, make 3 holes in it on one side at different heights. Fill the can with water and observe what happens. Water from the lowest holes comes out with greatest pressure and hence it travels maximum distance, whereas water coming out from the height hole fall nearest due to the least pressure of water. Water from middle holes falls in between. एक बड़ा लंबी कैन लेनी है, अलग अलग डेप्थ्स पे आपको होल कर देना है. अब आप देखेंगे जब पानी हम ऊपर तक भर देंगे, सबसे जो नीचे आपका होल होगा उसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा पानी तो वो दूर तक जाएगा. जो बीच वाला होगा समवेयर इट विल फॉल डाउन इन द मिडल और जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे पास आपका गिरेगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर सबसे ऊपर कम होगा. This activity shows that pressure increases with the depth of water. Activity 8. Take a rubber pipe and fit a balloon tightly on one of its ends. Fill water from the other end. What do you observe? You see that the balloon inflates with the pressure of water. एक inflated balloon आपको लेना है, deflated balloon लेना है. उसमें आप पानी जब भरते रहेंगे तो जब जहाँ जहाँ पानी आपका जाएगा balloon में, जैसे जैसे आप भरते रहेंगे वो inflate होता रहेगा. Pressure exerted by air. Gases also exert
प्रेशर, जो गैसेस होती हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. एक्टिविटी 9. Take a balloon, inflate it, leave the mouth open. What happens? The air moves out and the balloon deflates. Take a balloon, prick it with a needle to make holes. Can you feel the air in it? The answer is no. अब आपको एक बलून लेना है, उसमें हवा भरनी है, उसका माउथ भरने के बाद छोड़ देना है, उसमें से तुरंत ही सारी हवा बाहर आने लग जाएगी. इसका मतलब क्या है? जो एयर होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है. बलून में डालेंगे, फूल जाएगा, निकाल देंगे, वो वापस डिफ्लेट हो जाएगा. The above activity shows that air exerts pressure in all directions and also on the walls of the container. Atmospheric pressure. Scientists discovered atmospheric pressure in the 17th century. This discovery uncovered an interesting fact that air actually has weight. That weight of the atmosphere presses down on the Earth's surface and creates a pressure on it. The pressure at any point exerted by the weight of the air above it is called the atmospheric pressure. तो atmosphere में भी air है, upper atmosphere में और भी ज़्यादा ये thick layer है air की, जिसकी वजह से ही atmosphere में constantly gases का pressure feel होता रहता है. Atmospheric pressure on the Earth's surface at sea level is about 100,000 Pascal, that is 1,000 kilo Pascal. If such an enormous amount of pressure is acting on us, why do we not feel it? This is because the pressure of the blood in our blood vessels and that of the other fluids present in the blood balances out the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is measured using an instrument called barometer. अब इतना ज़्यादा atmospheric pressure है तो हमें feel इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी body के अंदर जो blood pressure है और blood vessels या veins जो pressure exert कर रहे हैं, it balances out the atmospheric pressure. Fact box. The weight of the atmosphere on the top of your head is 250 kilograms a watt, which is equivalent to the weight of about 2 baby elephants. तो आपके head पे जितना atmospheric pressure अभी भी present है, feel नहीं हो रहा है, but जितना present है वो approximately 2 baby elephants का जितना weight होता है उतना atmospheric pressure है. Otto von Guericke's experiment. We have just learned the pressure of the atmosphere is enormous. A very spectacular demonstration of this was done by the German physicist and engineer Otto von Guericke in the 1600s. In this demonstration, he took two semicircular bowls made of copper, fitted them together to form a hollow sphere, and removed the air inside the sphere using the suction pump he had invented. These two semicircular bowls were held together only by the presence of the atmosphere. He then got two teams of 8 horses each to pull the bowls apart. Guess what? The bowls held tightly together, demonstrating the enormous force of atmospheric pressure. तो ऐसे ही एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, दो कॉपर की उन्होंने बोल्स लाए, अंदर से सक्शन ट्यूब से उन्होंने सारी एयर निकाल दी और उसके बाद उन्हें ज्वाइन कर दिया. दो हॉर्सेस को भी जब उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल अपार्ट करने के लिए बुलाया गया तो वो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बोल्स. Variation of atmospheric pressure with altitude. The altitude of a place is its height above sea level. The atmospheric pressure at a place depends on its altitude and decreases as we go up. We know that atmospheric pressure at a place is the force exerted by the weight of the air column above that place. As we go up, the length of the air column above us decreases. This means its weight decreases and therefore the atmospheric pressure is smaller at higher places than at sea level. तो sea level से ऊपर higher altitude पे जब आप जाते हैं तो ये air का जो bundle है ये थोड़ा thin होता जाता है जिसकी वजह से atmospheric pressure और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. तो जितना high altitude पे आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा atmospheric pressure भी increase होता रहेगा. If the pressure of atmosphere is changed suddenly, the blood vessels in our body will burst due to pressure of the blood and other fluids inside. That is why astronauts have to wear special pressurized suits. There is no air and therefore no air pressure in space. अब space में अगर suddenly इतना ज़्यादा atmospheric pressure body पे feel होगा तो सीधे जो veins और blood vessels हैं वो फटना शुरू कर देंगी और body फटने लग जाएगी बुरी तरीके से. इसीलिए एस्ट्रोनॉट स्पेशल सूट पहनते हैं, स्पेशल प्रेशर उसमें एक्सर्टेड होता है, कोई हवा नहीं होती है जिसकी वजह से एयर प्रेशर बॉडी पे फील नहीं होता है. Activity 10. Aim to show the presence of atmospheric pressure. Materials needed: a glass tumbler with a smooth edge at the mouth and without a rim, a piece of stiff cardboard a little bigger than the mouth of the tumbler, and water. It would be convenient to perform this activity over a wash basin or the kitchen sink. Method.
Fill the tumbler with the water to the brim. Cover the tumbler with a cardboard piece. Figure A. Place the palm of your hand over the piece of cardboard and quickly invert the tumbler. Figure B. Slowly remove your hand supporting the piece of cardboard. Figure C. Observation: you will observe that the cardboard piece will not fall. Conclusion: atmospheric pressure provides enough support force to support a full glass of water. टम्बलर में पानी भरिए, इन्वर्ट करिए, कार्डबोर्ड लगाइए, वापस से उसको इन्वर्ट कर दीजिए. अब जब आप धीरे धीरे कार्डबोर्ड को हटाने की कोशिश करेंगे तो जो कार्डबोर्ड है वो नहीं हटेगा, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें एक्ट अपॉन कर रहा है. Activity 11. Aim to study atmospheric pressure using rubber suckers. Materials required: rubber suckers. Method: take a rubber sucker and press it firmly to a smooth surface like a kitchen tile or a plain glass window. Try to pull it out. Observation: you will see that it is really difficult to pull the rubber sucker off the smooth surface. Conclusion: by pushing the rubber sucker against the smooth surface, you have created a partial vacuum, and the pressure of the air pressing on the outer surface of the sucker holds it in place. Extension: take a smooth stainless steel or ceramic plate and stick the rubber sucker on it. You can now hold the plate at any angle, horizontal, vertical, upside down, etc., and try to pull the rubber sucker off the plate. You will find that the rubber sucker remains stuck to the plate regardless of the angle at which you hold the plate. This shows that air exerts pressure in all directions. तो rubber sucker आपको लेना है. स्मूथ सरफेस कोई भी टाइल वगैरह आप ले सकते हैं. अब जैसे ही आप इस रबर सकर को पुल करेंगे तो वहाँ पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. वो क्रिएट होगा जिसकी वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर आ जाएगा. किसी भी डायरेक्शन में आप उसको रबर सकर को मूव करेंगे वो हिलेगा नहीं, क्योंकि गैसेस जो हैं हर डायरेक्शन में आपका एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है. Keywords: force, any push or pull which moves the thing. Magnetic force, the force of the magnet which attracts some metals like iron, etc. towards itself. Mechanical force, force generated by a machine is called mechanical force. Muscular force, force produced by the muscles of any living organism. Manometer, device to measure the pressure exerted by liquids. Pressure, the force per unit area. तो अलग अलग टाइप के फोर्सेज होते हैं: कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, मस्कुलर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, मल्टीपल काइंड्स ऑफ फोर्सेज होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज दोनों प्रेजेंट होते हैं. Quick roundup. Force is due to an interaction between two objects. Force has both direction and magnitude. Forces are of two types: contact force and non-contact force. Pressure in liquids increases with depth. Pascal's law states that when pressure is applied to a liquid, it gets transmitted equally in all directions. The pressure exerted by air around us is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure decreases with altitude. Atmospheric pressure is measured by an instrument called barometer. तो फोर्स में आपका पुश और पुल होता है. नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, दो टाइप के आपके फोर्सेस होते हैं. प्रेशर भी आपका फोर्स का ही एक पार्ट होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर इन जनरल प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो बैरोमीटर होता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए.